Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone, world over, all our brothers and sisters across the globe. Green morning, green afternoon, green evening. If you're in Canada, Latin America, and United States, it's a wonderful green morning. If you're having your cup of coffee, cup of tea, you're going for the morning jog, and you're in the gym, enjoy yourself and be a part of our journey together. Let's take a walk. Let's hold a hand of each other. If you're in Europe, I know you must have enjoyed your afternoon lunch, had a little siesta, and before you go for your evening coffee or your tea, we are together. And of course, if you are in Middle East or Central Asia, you're just behind India's timings. But if you're in Southeast Asia, you are ahead of us. So we extend a hearty welcome to all our brothers and sisters, wherever you are. It's indeed a great, great pleasure to have all of you with us. Ladies and gentlemen, let's take on a journey together today with one of the prestigious Government of India undertaking bank, Union Bank of India, Union Nari Shakti, Women Empowerment. And today, on the eve of a very special day, that's the 5th of September, tomorrow is India Teachers' Day. And that is tomorrow. But today, as a curtain raiser, Union Bank of India is bringing a very special program for all of you. And we will take on a plunge and we will take on a journey along with our distinguished guest. And this is a happy Teachers' Day to you from the Union Bank of India. So, Ashish ji, if you come live, Ashish ji, your camera, if it comes, yes, there you are. So, hearty welcome to you. Ashish Tripathi ji is from the Union Bank of India, and he's from the Delhi South Regional Office, and he's joining us. Beautiful building. I think it's a 6th floor next to the Metro New Delhi railway station. When you come to that huge building and you go to the glass building and go to the 6th floor, you find a huge setup of the Union Bank of India. And each one of them is quite surprising. They all work so hard and so late because they want, we all should be facilitated. With these words, Ashish Tripathi ji, let's take on a journey together. Union Bank of India with you on the eve of Teachers' Day. Thank you, sir, for your nice words. Namaste and a very good evening to respected Sharma sir and all my esteemed guests over here. It's a great pleasure and honor to me. It's a great pleasure and honor to me to welcome you all on behalf of India, on behalf of Union Bank of India. I, Ashish Kumar Tripathi, welcome all of you. So, as sir said, that India is going to celebrate a Teachers' Day on 5th of September 2024. So, as we all knows that all the world is celebrating Teachers' Day on the next month, 5th of October. But India is celebrating Teachers' Day on 5th of September, a month before. So basically, I just want to explain the reason why we are celebrating the Teachers' Day a month back on 5th of September. So 5th of September is the birth anniversary of our ex-president, second president, and the first vice president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. So he was a great scholar, he's a great philosopher, and he was a great teacher. He was professor into very esteemed organization like the Calcutta University and the Oxford University. So when he became the first president of India, some students came to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan and want to celebrate his birthday. So when he was president, so he said to the students, okay, so I'm not going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate as a Teachers' Day. So on the said day, India continue to celebrate
Teachers Day on 5th of September. So teachers are very important, play a very important role in our society and in our country. Dr. APJ Abdul Kalam has said nice words to the teacher that teachers are the backbone of any country. They are the pillars on which all aspirations are converted into the realities. So a good teacher helps us to become a good human being in the society as well as in a country. Teachers know very well that the students who are sitting in front of them are going to govern the nation tomorrow. So the future of any development of any country is in the teacher's hand. So teachers are play a very important role in the society and the country. See, we are not learning only the academics. We are learning the new things every day through our teachers. Teachers are, they are molding a character. Teachers always encourages us. Whenever we say we are educated or we are highly educated about a subject, so it includes everything. It includes our attitude. It includes our character. It includes our how a human being I am. So teachers, I must admit that we acquire all these things from our teachers only. So tomorrow we are going to celebrate a Teachers' Day, and Union Bank of India is honoring the educators who shape our future. And tomorrow, a day of acknowledgement, their hard work, dedications, and impact to the society. A teacher is the prime architect of every successful career. So Teachers' Day is not just a calendar's day. It's a moment or it's a thought to express our gratitude to our teachers. So from now onwards, I want to start the Union Bank of India's product journey. So basically, everywhere we are celebrating the women empowerment. The women are the key centric of this society. They play a very critical role in our society. And as our MD and CEO is also a woman, so they have come out with the new schemes those schemes benefited to the women's. So Union Bank of India has come out with the different schemes. Those are schemes including credit facility, loans, the saving schemes, the deposit schemes, the credit card schemes, and the super salary schemes. So first I start with the loan schemes that called Union Nari Shakti scheme. We celebrate the Nari Shakti in our bank. As our MD and CEO is also a woman, so she has developed a very beautiful schemes called Union Nari Shakti scheme. This scheme is specifically for the women who are engaged in the MSME sector or who want to develop their business in this MSME sector. Any woman, whether she is a proprietor or a partner or any private limited firm, all women are eligible for these schemes. This is a very beautiful schemes because in these schemes, we as a Union Bank of India gives a very competitive price across the industries. If we talk about these schemes, so the basic purpose of this scheme is to cater our working capital requirements, the daily needs which we require in our business, and as well as the if customer want to or borrower want to purchase some plant and machineries, if they want to construct a factory or if they want to buy a factory or the equipments for their business, so we are giving
the working capital limit as well as the term loan limit for to extend their business. So so first, the quantum of this scheme is 2 lakh rupees. We are giving from 2 lakh rupees to up to 10 crore rupees. So any business woman, if they want to establish their business and they want some quantum and they are not having so much money in their hand, so Union Bank of India welcome all such women entrepreneurs. We are ready to give you the credit with the very minimum margin of 5%. If suppose if you want to take a loan of rupees 1 crore, then you have to give just 5% of 1 crore. Apart from that, 95% will be covered by the Union Bank of India and will be covered by in this scheme. Apart from this, if you want to take more than 1 crore rupees, then you have to bring a 15% margin. And this is very minimum margin if you require any working capital limit of any term loan to establish your or to do a business. We are giving processing charges nil up to 200 lakhs, up to 2 crore rupees. There is no processing fees. If you go to the any bank and if you talk about the processing fees, then it should be near about 0.50% to 1%. But in this scheme, Union Nari Shakti scheme, Union Bank of India is giving taking 0% processing fees and more than rupees 2 crore, 50% concession on the processing charges. Whatever the processing charges will be there, we are giving 50% concession. We are not taking any collateral security up to rupees 5 crore. If somebody wants to somebody wants to take a credit up to rupees 5 crore, then the borrower should not be liable to give any collateral security to the bank. If the credit facility is more than 5 crore, then there is very minimum 25% collateral security and the other remaining facility will be covered under the government schemes like CGTMSE scheme and CGFMU schemes. So basically, there is no collateral for up to 5 crore rupees and even more than 5 crore rupees, very minimum collateral security bank is asking. So this is very, very, very crucial scheme for the women. If any women want to establish their business, if any woman want to grow their business, so this scheme is very helpful for them. So this is even apart from the processing charges, apart from the collateral security, we are giving 1% additional rate of interest concession to each borrower. If suppose today's interest rate is 9%, then through this scheme, we are giving 1% additional discount to all the borrowers who comes under this scheme, Union Nari Shakti scheme. So I request each one of you to do a business, to indulge in trading activities, to indulge in some kind of business. And if you're not having that much of credit in your hand, then you come to the Union Bank of India and we are very happy to give you this facility, this Union Nari Shakti scheme. Apart from this scheme, we have come for the, if you are working in private companies or you are working in a government company, you must be having your salary account with different banks. I'll not say anything that you are not getting benefit from them bank, but I must say that you check Union Bank of India's salary account schemes. What are the benefits which we are giving, which we are offering to you? You please compare with our benefit to the other bank's benefit. So we have divided our salary schemes into 3 parts. One is classic, second is executive,
and third one is Premier. So I'll not say much about the classic scheme, because those who are getting the salary below than 25,000 rupees, so that classic scheme is for them basically. Even though they will get the benefits in this scheme also, in the classic scheme, but not as much as they are getting benefits in executive and premier scheme. In executive and premier scheme, for executive, those who are getting salary more than 25,000 up to rupees 70, below rupees 75,000, that comes under executive schemes. And those who are getting salary more than 75,000 rupees comes under the premier scheme. You will be surprised, Union Bank of India is giving 55 lakh rupees accidental insurance at free of cost through this scheme, through your executive and premier salary account holder. We are giving 55 lakh rupees accidental insurance at free of cost. There will be no charges, there will be no pricing for those insurance policy. Apart from this, we are giving 1 crore air accidental insurance at free of cost into these two schemes, executive as well as premier schemes. We are giving 1 crore air accidental insurance at free of cost. Apart from this accidental benefit, we are giving a lifetime free Rupee Select credit debit card. Through that debit card means there is no joining fees, there is no annual charges on this card. You can withdraw multiple times. Bank will not charge anything. Bank will not charge a single rupee on each and every transaction. You can do multiple transactions. You can do n number, charge anything. Apart from this, in this Rupee Select debit card, you will get 8 domestic lounge access and 4 at free of cost in a year. Quarterly 2 domestic lounge access you will get with this card, Rupee Select debit card, and the 4 international lounge access absolutely free with this debit card. There is no joining fees, there are no annual fees. You can do multiple transactions with this card. There will be no charges from any ATM, whether Union Bank of India's ATM or any other bank's ATM. So the end, with this scheme, you will get the concession in housing loan, in education loan, or in any other credit facility. You will get the concession as well as the concession in processing fees, and the concession in rate of interest. आशीष जी बीच में थोड़ा सा आवाज एक बार चली गई थी। जो लाउंज के टाइम में आप बता रहे थे ना, लाउंज के, उसे थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर दें और हिंदी में भी कुछ लोगों को दे दें तो वो लोग उसमें ले लेंगे। वो लाउंज वाली बात कहीं वो बीच में सिग्नल चला गया था, आई थिंक। ओके थोड़ा सा उसको आप दे दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी। तो हमारे पास जो सैलरी अकाउंट्स की स्कीम है, 3 स्कीम है, क्लासिक, एग्जीक्यूटिव एंड प्रीमियर। इनको थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए प्लीज। हाँ जी। तो क्लासिक के अंदर जो भी सैलरी होल्डर है, जो 25 बिलो 25,000 रुपीज जिनकी सैलरी अकाउंट में आती है, क्रेडिट होती है, दोज कम्स अंडर द क्लासिक स्कीम। एंड जिनकी सैलरी 25,000 रुपीज से लेकर और बिलो 75,000 रुपीज आती है, दोज कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव स्कीम्स। एंड मोर देन 75,000 salary holders comes under the premier scheme. In all 3 schemes, there will be no average balance in the account. Customer need not to be maintain any balance in this account. There will be no charges for the said accounts. Apart from this, in classic account holder, customer will get a platinum card, and the executive and premier account holder, customer will get
the Rupee Select debit card. In this Rupee Select debit card, Union Bank of India is giving 55 lakh rupees accidental insurance at free of cost. There will be no charges, no pricing for these 55 lakh rupees accidental insurance. Apart from this 55 lakh rupees accidental insurance, Union Bank of India is giving 1 crore air accidental insurance at free of cost. So these two are the accidental benefit with this account scheme. Apart from this, customer can withdraw unlimited of customer can do n time of transaction through any bank's ATM machine, चाहे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन हो या फिर किसी और बैंक की एटीएम मशीन हो, कस्टमर एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकता है विदाउट एनी चार्जेस. जो ये डेबिट कार्ड हम दे रहे हैं विद दिस अकाउंट स्कीम, उस डेबिट कार्ड की ना तो कोई एनुअल फीस है और ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस है. In both schemes, debit card are free for their lifetime till they are getting their salary in the account and even after they retiring. If they retire and they continue with the scheme, if they continue with the accounts, they will get the same benefits, whatever benefits they are getting at the time of the service period. Even after the retirement period, they will get the same benefit, whether it is accidental insurance, whether it is debit card facilities, whether they are concession in the credit facility. They will get the same benefit after their retirement. Now let's talk about, which I was discussing about, the lounge facility available with this card. So if you take the classic card, Rupee Platinum card in classic scheme, you will get 8 domestic lounge access free in a year. Quarterly, 2 domestic lounge access free, domestic. And if you take this USSA in premier account or in executive accounts, if you get this Rupee Select debit card, then you will get 8 domestic lounge access free and 3 international lounge access free in a year. With this debit card, very attractive features are there in this debit card. Many offers are there. Apart from this, loan rate of interest concession and processing fees concession are there in all 3 categories, salary account categories. So these are the benefit of this salary account. We have introduced, Union Bank of India has introduced a women-centric credit card called Divaa. So Divaa is a credit card which is specifically designed for women. Women will get the maximum benefit with this card. They are getting many attractive features in this card, and they will get the multiple offers with this card, with this credit card. And the eligibility criteria and the income criteria is very comparative from the other peers bank. Means if you are earning a 50,000 rupees or 30,000 rupees, then you will get this card. Means if your annual salary is approximately 2.5 lakh, and if your ITR income is 2.5 lakh in a year, then you are eligible for this credit card. And this card is specifically for women only. And the base card limit is 50,000 rupees, and the upper is according to as per your eligibility criteria, you will get the credit card limit. On every 100 rupees spent, you will get the 2 reward points with this card. And as I said, that domestic lounge access and the international lounge access are free with the Rupee Select debit card. The same features in this credit card also. This credit card holder will get 8 domestic lounge access and 2 international lounge access free in a year. Additionally, credit card holder will get 12 lakh rupees accidental insurance also with this credit card.
and there is no joining fees with this card, and very minimum annual fee, that is 499 rupees, and that also can be waived off if your annual spend is 30,000 rupees. If you spend 30,000 rupees in a year, that is a very minimum amount, then there will be no annual fee with this card. So Union Bank of India has also come out a product for a saving account holder, women-centric product, that is called Union Samriddhi account. That account is specifically designed for the women and the ladies who are more than 18 years old. Means if you are above 18 years old, then you can open Union Samriddhi account in any branch of Union Bank of India. In this scheme, in this Union Samriddhi account, Union Bank of India is giving 5 lakh rupees on detection of any type of cancer, whether breast cancer, ovarian cancer, or cervical cancer. Union Bank of India is giving 5 lakh rupees for cancer coverage. Apart from this, we are giving the Rupee Platinum debit card with the same benefit and features, like there is no annual joining fees, and number of transactions are free, and the domestic lounge access are also free with this debit card. So this scheme, this saving scheme, is benefited for the women and the ladies who are more than 18 years old. And with this, in this scheme, we are giving 5 lakh rupees accidental insurance also. At free of cost, there will be no charges. Women or the customer need to maintain a 15,000 rupees, that is average quarterly balance. Means you don't need to maintain 15,000. You don't need to keep 15,000 rupees on daily basis on every day. You just need to maintain an average quarterly balance, that is 15,000 rupees. And there are concession in housing loan and the retail loans or the education loan, vehicle loans. Customer will get the concession in this scheme also. So these are the schemes. These are the product basically designed for the women and the men also. Sir, एक आपका दिवा क्रेडिट कार्ड है, अ वुमन सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड लोडेड विद बेनिफिट्स विद एनओ ज्वाइनिंग फी। yes ये sir. एक बड़ा अच्छा आपने बनाया है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? आपने एक्सप्लेन तो पहले सारा कर दिया ये, लेकिन इसका विजुअल इस स्टेज पर आया है, तो इसके बारे में अगर कुछ थोड़ा सा भी आप बताना चाहें। अर्बन क्लैप है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। हाँ जी। तो दिस कार्ड, ये जो क्रेडिट कार्ड है, हाँ, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशली डिजाइन किया है फॉर वुमेन्स। अच्छा, ओके। वुमेन्स प्रोडक्ट हैं, और जो भी वुमेन के यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, बैंक ने स्पेसिफिकली टाई अप किया है, और अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं जो इस कार्ड के साथ दिए जाते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी, जो इसके अंदर जो ऑफर्स इसके अंदर जो शो हो रहे हैं इन दिस स्लाइड, है ना, वो सारे के सारे ऑफर्स जो हैं वो इस कार्ड के साथ दिए जाते हैं। ओके, ओके। एक आपका 24/7 कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर ट्रैवल एंड होटल रिजर्वेशन, कॉन्सियर्ज है, क्योंकि मुझे तो टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, तो मैं एकदम, मेरी नजर वहीं जाती है। फिर आपने एयरपोर्ट लाउंज वगैरह भी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस फ्री हैं, और 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस फ्री हैं। हाँ जी, हाँ जी जी, विद दिस क्रेडिट कार्ड। एंड इवन इफ यू आर अर्निंग ओनली 2,50,000 रुपीज इन अ ईयर, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कार्ड। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें चार्जेस लगते हैं, एनुअल फी कौन देगा इसकी, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। इवन आई एम यूजिंग द कार्ड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड द अदर बैंक आल्सो, एंड इवन आई स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट विद दिस कार्ड्स, स्टिल आई एम charging a very huge amount. But if you spend 30,000 rupees in a year, then there will be no annual fee for this card. Okay, okay.
बाकी सब चीजें आपको, एक आपका ये था कुछ एलिजिबिलिटी एंड कार्ड फीचर्स, ये आपने बता दिया था जी कि एज क्राइटेरिया है 18 से 65 साल तक। जी फिर आपने प्रोफेशनल्स के लिए बताया 18 से 70 साल तक। जी जी। फिर आपने एक बताया था मिनिमम इनकम आपकी 2.5 लाख पर एनम होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और जो आपकी बेस की कार्ड की जो लिमिट है वो 50,000 के करीब हो। This और is the base card limit, हाँ and the जी। upper limit can be decided by as per your eligibility. If you ओके। suppose if you are earning 10 lakh rupees or 15 lakh rupees, हाँ then you will get 2 lakh rupees or 3 lakh rupees or whatever amount you want as per your हाँ हाँ eligibility criteria. You will get the हाँ। limit of your card. ओके ओके। और एक जो चीज आपने यहाँ पर बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट दिया हुआ है कि इफ यू स्पेंड पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज एंड अबव, तो जी, आपकी जो एनुअल फी है वो वेव्ड ऑफ है। वेव्ड ऑफ है, कंप्लीटली वेव्ड ऑफ है। और सर ओके। 30,000 रुपीज बहुत ही छोटा अमाउंट है एक साल के हाँ, अंदर स्पेंड करने के लिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं और हाँ एक जी। भी खाते पीते भी हैं तो भी आपका जो बिल है अराउंड वो 200 से लेकर और 1,000 रुपीज के बीच में आ जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा है ये आपने जो पॉइंट्स हैं इसके। और सर विद दिस आई जस्ट वांट टू शेयर यू सम मोर थिंग आल्सो। बताइए बताइए। हाँ, हमारे फिर पास हाँ। जी टुडेज डिस्कशन वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन एंड हाँ जी। celebrating the teachers day, so our main focus is on was on teachers women only. हाँ बट जी। यूनियन बैंक हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास भी बहुत सारी अट्रैक्टिव स्कीम्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, टीचर्स के लिए। जो टीचर्स अपना स्कूल खोलना चाहते हैं, अपना कॉलेज खोलना चाहते हैं, अपने कोचिंग सेंटर्स खोलना चाहते हैं, उनके हम्म। लिए स्कीम्स हैं हमारे पास। उनको हाँ भी एक अच्छा खासा अमाउंट हम लोग उनकी वर्किंग कैपिटल और उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है हाँ उसके लिए हाँ। भी काफी अच्छा क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं विद द कम्पिटिटिव प्राइसिंग। बहुत ठीक अच्छा। है। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अगर हम अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहें तो क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारी मदद करता है। बिल्कुल तो सर। दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने खुद कवर किया तो बड़ा अच्छे से। और फिर आपने कहा कोई स्कूल भी सेटअप करना चाहें, कॉलेज सेटअप करना बिल्कुल चाहें, सारी चीज। हाँ स्कीम है फॉर प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके हाँ लिए भी जी। हमारे पास स्कीम है। उसका स्पेसिफिक स्कीम का नाम, जैसे इस स्कीम का नाम था यूनियन नारी शक्ति क्रेडिट हाँ कार्ड जी। का, क्रेडिट कार्ड। ऐसे ही उस स्कीम का नाम है यूनियन प्रोफेशनल स्कीम, जो ओके। कि केवल केवल प्रोफेशनल्स के लिए है। जो वो टीचर्स हों या फिर वो सीए हों, सीएस हों, लॉयर्स हों, उनके लिए स्पेसिफिकली स्कीम्स हैं। डॉक्टर्स हों, उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम है वही हमारी जो है यूनियन प्रोफेशनल स्कीम। वाओ। वाओ। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी नाइस। और इसके बाद आप कुछ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सारे टीचर्स यस का सर, आभार भी प्रकट कर रहे हैं स्लाइड में। यस सर। हाँ जी। सी आई वांट टू शेयर कि अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन और ऐसे स्मॉल डिस्कशन अगर आप और रख सकते हैं, ठीक है, तो वो बैंक के लिए भी बेनिफिट होगा, वो क्या कहते हैं कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिट होगा, जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी बेनिफिट होगा। जो भी लोग इस टाइम, क्योंकि हर कोई इस टाइम पे हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपने प्रोफेशन में है, कोई अपने बिजनेस में है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू एवरीवन टू रीच द बैंक और द ब्रांचेस। ठीक है, हम्म। तो ये हम्म। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एवरीवन इज सपोर्टिंग डिजिटल। इवन वी आर टुडे वी आर at 9:30 p.m. and we are live discussing on the bank's product and the teachers day. So वंडरफुल। yes sir। आपका बैंक टोटल डेडिकेटेड है, टोटल डेडिकेटेड। लेकिन आज हमको ये लग रहा है एज ए मेल कि आपने फीमेल, विमेन, गर्ल्स, उन टीचर्स की ज्यादा केयर की आज। So in the next presentation, I assure you that ओके। yes sir, next presentation के अंदर मैं कुछ और प्रोडक्ट्स लेके आऊंगा जो कि एक वंडरफुल। पूरी कम्युनिटी को एड्रेस करते हों। रादर एक्सेलेंट। जो वुमेन्स हों, जो मेंस हों, जो हाँ। स्टूडेंट्स हों, जो प्रोफेशनल्स हों, सभी के लिए जो भी कम्युनिटी स्कीम्स हैं मैं उसको भी प्रेजेंट करूंगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जहां पर भी आप हैं, देश में विदेश में, हमारे भाई बहन जो एनआरआईज भी बाहर हैं और जो भारत में हैं, खासकर क्योंकि आज ऑन द ईव ऑफ द टीचर्स डे
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया और आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आए। और ये जो वाणी आप सुन रहे थे, ये आशीष कुमार त्रिपाठी जी की है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हैं। इन्होंने यहाँ पर अपना सेल नंबर भी दिया है, 8700398851। 8700398851। तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कोई भी किसी तरीके की आपकी क्वेरी हो, कुछ हो, किसी तरीके की कोई मदद चाहते हो, तो आप आशीष त्रिपाठी जी से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की पूरी प्रेरणा हमें गणेश प्रसाद जी से मिला, जो कि डीजीएम है न्यू दिल्ली के अंदर, और वो दिल्ली साउथ के रीजनल ऑफिस में है। जो मैंने खूबसूरत बिल्डिंग आपसे अभी जिक्र किया था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, अगर आप 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ को आते हैं और आप मेट्रो की तरफ को चलते हैं, तो सामने एक बड़ी मेट्रो की बिल्डिंग है। उसके 6th फ्लोर पर यूनियन बैंक के सभी अधिकारी वहां पर, और ये लोग सब इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे से हैं कि ये हर तरीके से चाहते हैं कि हर एक की मदद की जाए बेस्ट पॉसिबल वे में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और मैं भी इनके संपर्क में आकर ये थैंक यू तो त्रिपाठी जी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल आपका कार्यक्रम, क्योंकि कल टीचर डे है और लोग हमेशा फिनलैंड की एग्जाम्पल देते हैं और फिनलैंड की बातचीत करते हैं और फिनलैंड के बारे में बताते हैं कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। तो कल रात हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फिनलैंड लेकर चलेंगे और फिनलैंड के लोग आपके साथ जुड़ेंगे और एजुकेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। और मैं यूनियन बैंक को कल रात को फिनलैंड के साथ भी इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि हमारे कुछ एनआरआईज जो वहां से जुड़ेंगे फिनलैंड से, वो भी आएंगे साथ में। और कल क्योंकि टीचर डे है और हम अपने फिनिशिंग स्कूल, जो कि सर्विस इंडस्ट्री को डेडिकेटेड है, इसकी डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब अभी कोरोना वायरस के बाद आई है। इसका 5th एडिशन की ई बुक कल लॉन्च हो रही है। इट इज फॉर कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड यूथ एम्पावरमेंट। सो इट विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। कल आपकी इससे हम बातचीत करेंगे और इसमें भी हम यूनियन बैंक को जरूर एंडोर्स करेंगे अपने साथ और लेकर चलेंगे, बिकॉज आवर बेसिक एम इज कि एजुकेशन इकोसिस्टम में किसी ने बीच में पोस्ट किया बड़ा अच्छा, और मुझे वो कमेंट बहुत अच्छे लगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी especially at the high school level is a must for both male and female students to empower them with accurate information like Union Bank is giving today. It was a wonderful comment. तो वो बीच में मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और दैट इज समथिंग वंडरफुल विच वी गॉट। और इसी के साथ साथ यूनियन बैंक हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ा एमएसएमई के प्रोग्राम में, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में, उसके बाद स्किल इंडिया में जुड़ा। और अभी आपके लिए ये कार्यक्रम लेके आज का हम आए, एक कर्टन रेजर। और 26 तारीख को ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे, क्योंकि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है हर वर्ष, और हम स्ट्रेटेजिकली चैनलाइजिंग करेंगे रिटायरिंग और रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स और लेडीज की टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, इवेंट्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट, इन सब के रिलेटेड जितने भी वेंचर हैं, यूनियन बैंक हमारी सहायता के लिए वहां पर भी है। हमारे डिफेंस के लोग इस क्यूआर कोड को देख सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कार्यक्रम दिल्ली में मानक शाह ऑडिटोरियम के अंदर होगा, और ये थर्सडे 26 सितंबर को सुबह 10 बजे से, और इसकी लाइव टेलीकास्ट होगी आपकी चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। इस चीज की बातचीत करते हुए मैं इस स्लाइड प्रेजेंटेशन को यहीं बंद करूंगा। आशीष जी, मेरे जो कुछ एक मित्र अब्रॉड से जुड़े हैं, उन लोगों के कमेंट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, जी वो ये चाहते हैं कि आप एनआरआईज के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम अपने यूनियन बैंक की तरफ से, जो भी आपकी स्कीम्स हैं, जी आपके वेंचर्स हैं, क्योंकि जब आपने लाउंज की बात करी तो जी डोमेस्टिक लाउंज की बात करी, हम इंटरनेशनल लाउंज में भी आपके साथ चलेंगे, और जी जो भी खान का सामान रहता है वो सब चीजों की भी बातचीत करेंगे। तो एनआरआईज के लिए जो आपकी स्कीम है, जी क्या सर। ऐसा कर सकते हैं? डीजीएम साहब से भी अनुरोध करेंगे। जी इस महीने का आखिरी दिन है 30 तारीख को, जी जी 30 सितंबर को, क्या हम एक विशेष कार्यक्रम, क्योंकि जनवरी में एनआरआई भारत में आते हैं जी सर। और दिसंबर के 15-20 तारीख के बाद वो लोग आने लग जाते हैं,
तो जी जी। सितंबर में हम बैठे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में वो यूनियन बैंक के साथ फेविकोल की तरह चिपक जाए, और ऐसा कुछ हो कि आप उनके लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं करें कि एनआरआईज एंड यूनियन बैंक शुड बी इनसेपरेबल। तो उनके लिए अगर कुछ स्कीम्स आप वर्कआउट कर सकें। जी बिल्कुल सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनआरआई के लिए जो हमारे पास स्पेसिफिकली स्कीम्स हैं, तो उनके साथ मैं या फिर जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो भी एनआरआई डिपार्टमेंट वगैरह देखते हैं, ठीक है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। और एक मैं अच्छा और एक जो एनआरआई की जो भी स्कीम्स हैं उनको अच्छे से क्लासिफाइड करके जो भी बेनिफिट्स हैं एनआरआई के लिए, उसके लिए हम एक अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और हम आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत होंगे सर। वंडरफुल। आपकी पूरी टीम को, आशीष त्रिपाठी जी और गणेश प्रसाद जी के सहयोग से, उनके पैट्रोनेज में आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं। और हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री की तरफ से जैसे हम इनके साथ कार्यक्रम पहले करते रहे, कुछ ऐसा संजोग बनाएंगे कि महीने में जो आखिरी दिन होता है, जी किसी सर। एक प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर हम यूनियन बैंक को साथ जोड़ें और यूनियन बैंक को साथ लेकर चलें। आई एम प्रीटी श्योर वी विल हैव अ वंडरफुल जर्नी फॉर एवरीबॉडी। With these words, join me in extending deep gratitudes and thanks to Ashish Sir, thank Tripathi you ji. very much, sir. Thank you very much. And it's my pleasure and it's Union Bank of India's pleasure to, express our feelings and the gratitude towards the teachers and the explanation of our products. थैंक यू आशीष जी। आज विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस्ड रहा, टीचर्स पे Yes, फोकस्ड रहा, और इसी तरीके के कुछ और कार्यक्रम भी आते रहेंगे। मेल मेंबर्स डिस्करेज ना हो, आपके लिए भी हम कुछ स्पेशल और लेके आएंगे। इस तरीके का प्रोग्राम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आभार प्रकट करते हुए, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ग्रीन sir. मॉर्निंग एंड अ ग्रीन आफ्टरनून एंड अ ग्रीन इवनिंग। आई एम कमिंग टू यू विद द वंडरफुल union, collaboration, and podlocking and confluence with the Union Bank of India. Thank you, नमस्कार एंड Thank शुभ दिन और शुभ रात्रि दोनों, जहां जहां समस्त विश्व में जो जहां